Hello student, Standard 9 English Medium, Subject Maths, Chapter number 6, Lines and Angles. Students, it's before we have already learned about in previous standard lines and angles. Students, two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are opposite angles, opposite rays. So here this is two adjacent angles, this angle and this angle. But it's not a linear pair. In straight angle, one arms, it's an angle, and this ray and this ray are both angles arms, and this ray and this both are opposite ray. So that angle is linear pair, and its addition linear pair of angles is 180 डिग्री. तो मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स ये दोनों जो एंगल्स है उससे हम एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं. यहाँ पर भी ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है. यहाँ पर उसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ऑपोजिट रे. नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रे एंड कॉमन आर्म्स here given. Okay students, so it's different between adjacent angles and linear pair. Now afterward, corresponding angles, alternate angles and same side transversal to interior angles. Here two parallel lines and this transversal line. So here we know that here both are adjacent angles, but this angle and this angle both are vertically opposite angles. जैसे कि कोई दो लाइन ऐसे क्रॉस हो रही है तो यहाँ पर ये दोनों जो ऑपोजिट एंगल्स है वो दोनों इक्वल्स होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंड सेम लाइक दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बट हियर दिस एंड दिस एंगल्स बोथ आर लीनियर पेयर. सो सेम लाइक दैट एक लाइन पे जो भी एंगल्स होते हैं वो दोनों लीनियर पेयर होते हैं और दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है. मीन्स ए सेमी सर्कल बन जाता है. स्टूडेंट्स, वी नो दैट सर्कल हैव अ 360 डिग्री मेजर एंड इफ इट्स डिवाइड बिटवीन center point, that means its diameter, so it's divide 180 degree 180 degree. Two partitions, semicircle both are. Okay students, so afterward here corresponding angles pair, alternate angles pair and interior same side transversal to interior angles are supplementary. Here same side interior angles, but it's before corresponding angles, vertically opposite angles are equal measure. Now afterward, basic terms and definition. Now who say that line segment and rays, if there are both the ending points given, then it's a line segment. If one direction is given and one is end points, so it's become ray, and if both direction given, then it's a line. Now in angle, that two rays and their common point, it's called initial point, means vertex. So these two ray, it's become angles.
So here given definition of angle, an angle is formed when two rays originate from the same end point. दोनों रे जो है, दोनों का end point जो है वो same point है. The rays making the angle are called arms. रे जो बनाते हैं, जो एंडिंग पॉइंट से वर्टेक्स से वहां से, उससे हम आर्म्स बोलते हैं. एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. तो दोनों जो रे है उसका जो एंड पॉइंट है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंगल्स. इन टाइप्स ऑफ एंगल्स, फर्स्ट, an acute angle. If the measure of angles between 0 degree and 90 degree, then it's become acute angles. Second, if the measure of exactly equals to 90 degree, then it's said to be right angles. Third number, an angle greater than 90 degree but less than 180 degree, then it's called a ऑप्ट्यूस एंगल. मीन्स जो भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बट इट्स लेस देन 180, दैट मीन्स 180 से कम है, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्ट्यूस एंगल. आफ्टरवर्ड, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मीन्स सेमी सर्कल ऑन अ वन लाइन, दैन इट्स अ स्ट्रेट एंगल. तो मीन्स जो एंगल का मेजर 180 डिग्री है, तो ऐसे सेमी सर्कल बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं 180 डिग्री, दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रेट एंगल. एंड आफ्टरवर्ड एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो मीन्स 180 से भी ज़्यादा मेजर है बट इट लेस देन 360 से कम है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. आफ्टरवर्ड, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल. तो उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं जो 360 डिग्री कंप्लीट करता है. आफ्टरवर्ड, पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, सेम लाइक दैट आई हैव एक्सप्लेन. फर्स्ट, एडजेसेंट एंगल. सो हियर गिवन दैट फिगर, two angles are adjacent angle. Angle AOB and angle BOC, both are adjacent angles. So their properties is they have same vertex, common arms and non-common arms either are on either side of the common arms. तो मीन्स यहाँ पर दोनों जो एंगल्स है उसे हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, और दोनों का जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स सेम है. कॉमन आर्म्स बीच में ओ बी रे है. सेम वैसे ही यहाँ पर सेकंड पॉइंट लीनियर पेयर. तो मीन्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे बोलते हैं? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ are said to be form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite ray. तो यहाँ पर ए जो एडजेसेंट एंगल्स है उसके अंदर इसे हम एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं, एंगल BOC एंड एंगल COA, बट इट्स ऑल्सो वी कैन से दैट linear pair. Why? Because their OC is the common arms. Here two angles, angle AOC and angle BOC, and both angles common arm are OC. दोनों का कॉमन आर्म जो है वो OC है, और नॉन कॉमन आर्म्स मीन्स जो कॉमन नहीं है, ऐसा रे है OB एंड दूसरा कौन सा है OA. तो दोनों जो रे है वो एक दूसरे के कैसे है? ऑपोजिट रे है, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखें तो एडजेसेंट एंगल्स में वो प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं हो रही है, जैसे कि ये दोनों के अंदर कॉमन आर्म्स है, दोनों का वर्टेक्स सेम है, बट नॉन कॉमन आर्म्स आर नॉट ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट रे नहीं है. आफ्टरवर्ड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन इट्स बिकम two pair of vertically opposite angles. Here angle AOD and angle BOC both are vertically opposite angles, and second angle AOC and angle BOD
it's also a vertically opposite angles.